Hi everyone, welcome to Simple Concepts. I'm your educator Niyati Paul. In this lecture series, we will be covering the entire polity syllabus for the Civil Services examination. And this particular lecture will be covering the part 2 of the question paper analysis. So before we actually begin with our lecture, let me first tell you all, you can get all the PDF and notes of all the lecture series that we will be conducting on our Telegram group. You can join the group and the link is in the description below. Having said that, let's start with our lecture. So जहाँ से हमने हमारा लास्ट लेक्चर छोड़ा था हम वहीं से फिर से बिगिन करते हैं. लेट्स स्टार्टिंग विथ फंडामेंटल ड्यूटीज़. सो पिछले कुछ लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने एनालिसिस किए थे, उसमें से आई रियलाइज दैट देयर आर 5 क्वेश्चन टोटली विच हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस पार्ट फंडामेंटल ड्यूटीज एंड मोस्ट ऑफ देम वर नेचर एंड प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चंस. So here's the first question. In the context of India, which of the following is the correct relationship between the rights and duties? ये सवाल पूछा था 2017 में. यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए थे हमें. फर्स्ट ऑप्शन वाज rights are correlative with duties. Rights are personal and hence independent of the society and duties. Third one is rights not duties are important for the advancement of the personality of the citizen. And fourth one is duties not rights are important for the stability of the state. So इसका जवाब जानने के लिए हम क्या करेंगे, वन एंड वन हम एनालाइज करेंगे कैसे ऑप्शंस आते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम द हम ऑप्शन नंबर 4 से ट्राई करते हैं. ड्यूटीज नॉट राइट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट, मतलब कि बस ड्यूटीज ही इंपॉर्टेंट है, नॉट राइट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेट. क्या ये ऑप्शन सही है? वेदर दिस और सेकेंड और फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है? तो बिफोर फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस कंसेप्ट्स वी फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट राइट्स एंड ड्यूटीज आर. सो कंसेप्ट जानने की कोशिश करते हैं सबसे पहले. सो लेट्स स्टार्ट. सो व्हेन इट कम्स टू फंडामेंटल ड्यूटीज, what we need to know is that though the rights and duties of the citizens are correlative and they are inseparable, the original constitution contained only the fundamental rights and not the fundamental duties. In other words, the framers of the constitution did not feel it necessary to incorporate the fundamental duties of the citizens in the constitution, but they incorporated the duties of the state in the constitution in the form of directive principles of the state policy, जिसको हम DPSPs भी कहते हैं. So later in 1976, the fundamental duties of the citizens were added in the constitution. So in 2002, one more fundamental duty was added, but that is not related to this. So हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा? It is question number 1, that is rights are co-relative with the duties. They are inseparable और हम लोग मिक्सअप नहीं कर सकते दोनों. ओके या फिर हम ये नहीं कह सकते कि राइट्स आर इंपॉर्टेंट, ड्यूटीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट. दैट कैन नॉट बी द केस. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और ट्रू ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन सिटीजन? ये क्वेश्चन था 2017 के क्वेश्चन पेपर से और ऑप्शंस थे अ लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज बीन प्रोवाइडेड टू एनफोर्स दिस ड्यूटीज. Second one was they are correlative with the legal duties. We have to select either of the following. So whether it is one only, whether it is two only, or both one and two, or neither one or not two. तो ऐसे सवाल आते हैं हमें बेसिकली क्वेश्चन पेपर से और हमको ये हमें जो आंसर नहीं है उसको हमें ऑड आउट मतलब बाहर निकालना है. दैट्स हाउ वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर. ओके सो ये हम सवाल का आंसर ढूंढेंगे, बट उससे पहले आई वुड लाइक टू कवर द रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस. उसके बाद हम पूरा इसका कंसेप्ट जानने की कोशिश करेंगे. सो हियर कम्स द क्वेश्चन नंबर 3. To uphold and protect of the sovereignty, unity and integrity of India is a provision made in which of the following? This question was asked in 2015. Whether it is preamble of the constitution, directive principles of the state policy, fundamental rights, और डी आंसर मतलब डी ऑप्शन था फंडामेंटल ड्यूटीज. लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. Which one of the following are among the fundamental duties of the citizens laid down in the Indian Constitution? This question was asked in 2012. So the options are to preserve the rich heritage of our composite culture, to protect the weaker sections from social injustice, to develop the scientific temper and spirit of inquiry. Fourth one is to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity. We have to select either of the option 1 and 2, 2 only, 1, 3 and 4 only.
एंड लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 यानी कि ऑल ऑफ द अबव. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. उसके बाद इसका भी जवाब जान लेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 इज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी. ये क्वेश्चन था 2011 से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट्स इट्स आइडल्स. तो हम अब क्या करेंगे, हम लोग पूरा कंसेप्ट जानने की कोशिश करेंगे विद दिस फंडामेंटल ड्यूटीज. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड we first need to focus on what are the features of fundamental duties. So मैं आपको लिस्ट डाउन करती हूँ फीचर्स क्या हैं. So basically some of them are moral duties while others are civic duty. For instance, cherishing noble ideals of the freedom struggle is moral percept, and respecting the constitution, national flags and the national anthem is a civic duty. They refer to such values which have been part of the Indian tradition, mythology, religions and practices. In other words, they essentially contain just a codification of tasks integral to the Indian way of life. Okay, तो guys जब मैं आपको यहाँ पे explanation, ये पूरे concepts मैं आपको explain करती हूँ, I am not really telling you all exact answer क्या होगा, but what you will have to do is आपको comment section में इन सारे सवालों के आंसर देने हैं based on my explanation. Okay, so basic, and the third feature is that fundamental duties का, unlike some of the fundamental rights which extend to all persons whether citizens or foreigners, the fundamental duties are confined to the citizens only and not to extend to the foreigners. For example, article 21 अगर हम देखते हैं तो क्या वो किसको लागू होता है, वेदर इट इज फॉर सिटीजन्स और बाकी लोगों को भी लागू होता है क्या, फॉरेनर्स को, ये भी हमें जानना जरूरी है. थोड़े थोड़े राइट्स ऐसे होते हैं जो सबको इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दोस पीपल आर सिटीजन और नॉट, सबको लागू होते हैं. थोड़े होते हैं कि वो बस सिटीजन्स को लागू होते हैं. Now fourth feature is that like the directive principles, the fundamental duties are also non-justiciable. The constitution does not provide for the direct enforcement by the courts. Moreover, they are therefore in the constitution and it does not provide for the direct enforcement by the courts. Moreover, there is no legal sanctions against their violation. However, the parliament is free to enforce them by the suitable legislation. Okay, so basically fundamental duties क्या करती हैं, they help the courts in examining and determining the constitutional validity of the law. मतलब constitutional जो भी अभी law newly launch हुआ है, जो कि enforce हुआ है, वो constitutionally valid है या नहीं, ये देखते हैं. So in 1992, the Supreme Court ruled that in determining the constitutionality of any law, if a court finds that the law in question seeks to give effect to the fundamental duty, it may consider that such law to be reasonable in relation to Article 14, that is equality before law, and Article 19, in which there are 6 freedoms which are mentioned, and thus they save such law from the unconstitutionality. They are also enforceable by law. Hence, the parliament can provide for the imposition of appropriate penalty or punishment for the failure to fulfill any of them. Okay. तो आगे मैं आपको कुछ फैक्ट्स क्लियर करना चाहती हूँ. In 1976, government set up the Sardar Swaran Singh Committee to make recommendation about fundamental duties. Government at the center accepted these recommendations and enacted the 42nd constitutional amendment in 1976, जो कि बहुत ही ज़्यादा important amendment हमें कहा जाता है 42nd constitutional amendment, क्योंकि बहुत सारे major changes हुए थे after this. So this amendment added a new part, namely part 4A of the constitution. This new part consists of only one article, that is article 15A, for the first time specified a code of 10 fundamental duties of the citizen. Okay, तो should we learn about some of the fundamental duties, कौन कौन सी है? I'll tell you all few. First one, मतलब मैं बीच बीच में बताऊंगी आपको. Important is to uphold and protect the sovereignty and unity of the integrity of India. ये एक बहुत ही important fundamental duty है. Second one was to abide the constitution and respect the ideals and institution, that is the national flag and national anthem. To cherish and follow the noble ideas that inspired the national struggle and freedom. To defend the country and render natural services when called upon to do so. To promote harmony and to
and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, and regional and sectional diversities, and to renounce practices to the dignity of the woman. Okay, derogatory to the dignity of the woman. So basically ये सारे जो fundamental duties हैं they are not enforceable by the court of the law. कोर्ट ऑफ लॉ बस हमको वो फॉलो करने होते हैं फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ आवर नेशन. So if we talk about fundamental duties, they help the court in examining and determining the constitutional validity of the law. And in 1992, the Supreme Court ruled that in determining the constitutionality of any law, if a court finds that the law in question seeks to give effect to the fundamental duty, it may consider such law to be reasonable in relation to Article 14, which says, what is the Article 14? It says about equality before law, और Article 19 in which all 6 freedoms are given. You can please list down, आपका आंसर आप लिस्ट डाउन कर सकते हैं कमेंट में, which all are the 6 freedoms that are given in our constitution. So thus they save such law from the unconstitutionality. Okay. So basically when it comes to fundamental duties, और भी बहुत ज़्यादा important हमारे fundamental duties है. For example, to develop scientific temper and humanism and the spirit of inquiry and inform, to safeguard public property and abjure the violence, to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity, so that the nation constantly rises to the higher levels of endeavor and achievement. So ये सारे हमारे fundamental duties हैं. Though they are not enforceable by the court of the law, the constitution wants every citizen to follow them so as कि हम अपने nation को है वो prosperity हम लोग दे सकते हैं. सो आई होप इस लेक्चर के बाद आपके जो मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट जो है फंडामेंटल ड्यूटी के ऊपर वो क्लैरिफाई हो गए होंगे. एंड रिमेनिंग मैंने फर्स्ट आंसर सॉल्व किया है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व किया है आपके लिए. रिमेनिंग 4 यू कैन jot your answer down in the comment section below, and you can stay tuned for more of the question paper analysis on our channel. And if you like this video, feel free to share our channel. Thank you so much.